Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de N.O.M.A.D et de son extension, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je lance une nouvelle playlist, la playlist Réaction, où je vais réagir à des vidéos que vous m'avez envoyées, ou des vidéos que j'ai pu trouver lors de mes recherches, on va dire, sur YouTube, ou des propositions des algorithmes. Évidemment, ces vidéos de réaction n'ont pas pour but de faire de la critique pour de la critique. Donc quand vous allez voir certaines vidéos, mon objectif n'est pas de descendre ou d'être négatif vis-à-vis du travail de la personne qui fait quelque chose. Mais c'est de partager avec vous des contenus, de les découvrir aussi parfois en même temps. Et ça va être le cas de cette vidéo aujourd'hui que j'ai trouvée et qui s'appelle Inside India First Model Train Company. Donc c'est un peu ça va être un peu la même chose que la visite virtuelle des usines que j'avais fait pendant le confinement. Donc celle de Pico, celle de Rocco et celle de Marklin. Et je vous propose qu'on passe donc ce temps ensemble à découvrir cette nouvelle compagnie de trains miniatures en Inde. Alors c'est vrai que moi, c'est une production que je connais très peu. C'est des modèles que je connais peu, et aussi bien à l'échelle 1 qu'en miniature, et donc ça m'intéresse de regarder ça avec vous. Alors la vidéo, elle dure à peu près 1 heure. Alors on verra, comme je ne l'ai pas encore regardé, ça va être un peu la découverte. On verra s'il n'y a pas un moment où je vais cutter parce qu'il y a du blabla ou des choses comme ça. Je ne sais pas du tout quel va être le contenu de la vidéo. En tout cas, c'est cette vidéo-là qui va ouvrir la playlist et je vais faire ça assez régulièrement parce que vous avez été nombreux à me solliciter pour avoir ma réaction et donc je trouvais ça intéressant. Et bien allons-y, regardons ça tout de suite. But it's sort of like a history more than a display. True, true, absolutely, absolutely. दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं who are not rich, but they are drawn to La traduction est très approximative. Hi everyone, welcome back to the channel. Today I am super excited because we are at Precision Model Works, a company that specializes in making incredibly detailed miniature model trains. But here the cool part, they do it using advanced 3D printing technology. We are going to take you inside, meet the team and see exactly how these amazing models are made. Let's go. Ah, l'Inde, c'est un pays dingue. Hello, hi, what's up? How are you? कैसे हो भाई? Hello Akash. Co-founder of Precision Model. This is Akash. Hello. Akash is a very important part of my model works. ठीक है? All good? Yes. All good. All good. अंदर चलते हैं. I'll show you guys around. On est all good. Ouais, bon, c'est des bureaux là. Hein. So this is our office. Like it's a very small space, so we don't have a storefront yet. तो हम लोगों का भी स्टोर का बंदोबस्त अभी सोच रहे हैं कब करेंगे. तब तक हम लोग इसी में ऑफिस बना दिए हैं. Donc là, c'est assez intéressant parce que bon, ils présentent leurs locaux, ils disent que pour l'instant c'est le début, donc ils n'ont pas de boutique. Avec son mug tête de mort, ça affiche un peu l'ambiance dès le départ. We mostly sell online, as you guys know. So vente essentiellement en ligne. This is Jyoti. Jyoti is our main admin. Bonjour Jyoti. And we have a small showcase here just to to show some of our products. I know we have to work on our representation. थोड़ा बड़ा display वगैरह की ज़रूरत है अपना product को दिखाने के लिए. पर बनाएंगे उसको बनाएंगे as la voix péco là-haut. But it's sort of like a history more than a display.
True, I would true, say. absolutely, absolutely. So it has some products that we are selling just so that कभी अगर कोई आते हैं उनको दिखाने के लिए, but it is actually more of a history. So ये जो है ना शताब्दी Indian Railways जो है, so of course you guys know कि WAP7 WAG9 is our Ça a l'air pas mal hein, comme modèle. main product or our flagship product as they call it, right? तो WAP7 WAG9 से हम लोग शुरू किए हैं, and this is our first version of the working WAP7 WAG9, the very first prototype जो तुम ऑर्डर करने का कोशिश किए थे तब तक सब चला गया था. So this is the very first one that we did, and then this is our first production of our WAP7 WAG9 का display model का जो free rolling model हम लोग किए थे. So this is that. This is our HOBG display version of WDM2. This is NDM6 kit. So NDM6 kit is basically what we started BMW with back in 2021. Ils sont sympas les petits locaux tracteurs là. हम लोग जब शुरू किए थे, so Precision Model Works was mostly about selling narrow gauge kits, right? Darjeeling Himalayan Railways, फिर कालका शिमला Railways, ये सब के जो kits होते थे, and most of our customers were abroad. So this actually was, I think, our first complete prototype, second or third NDM6 kit. Our first complete And then prototype. this is from our very first NDM6 display production. C'est joli hein. Bon, vos vitres elles sont dégueulasses les gars. Production किए थे, this is from that time. And this one, कौन सा? ये. अच्छा, so yeah, these are the coaches. So these are again, this Là c'est is les voitures. Vous savez que celle où il y a la moitié des gens qui sont dehors. And this is the old time maroon coaches. Ça a l'air pas mal hein. तो blue coach अभी आप लोगों के पास डिस्प्ले में है नहीं. So we have it upstairs. हम लोगों का जहाँ पे production का है ना, वहाँ पे हम लोग एक छोटा डिस्प्ले, वहाँ पे On va voir la production là, ça va être marrant. किसी भी मॉडल को बनाने से पहले उसका Allez, 3D une bonne डिजाइन image, तैयार किया जाता है. une bonne image जिसमें कि fait par मॉडल l'intelligence ट्रेन के सभी artificielle. छोटे-छोटे डिटेल्स को बनाया जाता है. So the work is quite long, which can't be seen in this video. After that, the design is printed using 3D printer. The model takes about 10 to 12 hours to print, which is quite long. So let's see the process further. resin 3D printing का post processing रहता है. तो first step is actually cleaning. So I think Durga is ready now to clean all these prints, so we can actually see him in action. So this is a very noisy process क्योंकि हम लोगों का बहुत यहाँ पे extract करके चिमनी लगाते हैं, extract करके देते हैं, फिर वहाँ पे air blow करते हैं. So I'll just explain the process. तो basically ये जो होता है ये 2 स्टेज cleaning में जाता है in cleaning solution. तो clean होके ये रैक पे चला जाता है जहाँ पे हम लोग रख देते हैं इसको for some time. फिर वो जाके क्यूरिंग में जाता है. So you asked right कि यहाँ क्यूरिंग का स्टेज क्या है. ऐसा नहीं कि प्रिंट और क्यूरिंग में चला गया. उसके बीच में ये पूरा स्टेप्स रहता है, right? So he will not... Ouais, alors là ils expliquent le processus lié à l'impression 3D. Alors on voit qu'ils utilisent du matériel qui est très connu, hein, parce qu'ils avaient des machines Lego, de la nid cubique. Et donc là, ils ont sorti les grappes qui ont été conçues, ils vont les nettoyer, puis ensuite après les exposer aux UV pour finir de solidariser, enfin de solidifier plutôt la résine. Donc c'est un processus qui est assez artisanal. À la limite, ça, on est, je dirais, dans un laboratoire qui peut quasiment être fait chez soi. Enfin, on voit, c'est un bâtiment qui est une cuisine, en fait. Hein. Donc, c'est assez intéressant. C'est une petite entreprise, apparemment. Hein. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas des grosses unités de production. Mais c'est intéressant de voir un petit peu leur process. De toute façon, dans l'impression 3D, il y a 2 choses qui sont importantes, la qualité de la résine qu'on va utiliser et la qualité de la modélisation et la façon dont elle a été, dont la pièce qu'on veut imprimer soit correctement positionnée avec des comment ça s'appelle, des maintiens pour que le layering de couches se passe bien. Now treat this, so there are specific steps.
फिर उसके बाद यहाँ पे रहना है, उसको ड्राई होना है, ड्राई होने के बाद क्यूरिंग होगा, क्यूरिंग होने के बाद सपोर्ट निकाला जाएगा. देन इट कैन गो फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस व्हिच एसेंशियली इज उसको सरफेस को प्रिपेयर करना, राइट. सो इट इज उसको सैंडिंग अगर करना है तो सैंडिंग करने का जरूरत है, वो करो, फिर प्राइमर डालो. So all those things get done after that. So I think what we can do is, because this is now a very boring process to see all the cleaning and all, Arka can take you upstairs and show the actual priming and painting process. वो कैसे होता है वो थोड़ा देख लो. Then we can head to the assembly room where the most exciting things actually happen. ठीक है, चल. So this is Harish. Okay. So How are you? So ये अपना sanding, painting सब इन्हों ही देखते हैं. So he does an amazing job on it. So all the finish that you see in our models is basically his creation, his handwork. So अभी जैसे एक model जो printer से निकलती है. Ah ouais, donc là, une fois qu'ils ont enlevé, qu'ils ont dégrappé tout, ils font une finition de surface à la ponceuse. On voit les extracteurs là. तो यहाँ पे जैसे हम लोग different grades के sands Ils vont appliquer un primer ensuite après avant de passer aux peintures. तो एकदम अच्छा polish लाने finishing लाने. D'accord, donc là il commence à égrener les surfaces avec du 400, du grain 400, et il termine au grain 2000. So this is how sanding comes. This is how sanding happens. Voilà, vache. So जितने सारे print. Parce que là on remarque que les petites grilles ou les petits barreaux qui sont aux fenêtres sont quand même vachement fins, donc faut pas se planter hein, quand tu fais la surface de ponçage. Lines होते हैं जितने सारे कोई support marks होते हैं from the print, उसको हटाने के लिए we use this. अभी this is the sanding process, right? तो अभी sanding process के बाद क्या रहता है? Sanding process में हम लोग first coat डालते हैं. Essentially we go for primer. डालते हैं लोग surface को primer. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire qu'une fois qu'ils ont sorti la pièce, qu'ils l'ont nettoyée, donc et qu'ensuite après ils ont fait le traitement de durcissement à l'ultraviolet, ils passent une première couche de primer sur la pièce brute qui a été dégrappée. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils font l'étape de ponçage dans leur cabine d'extraction. जैसे अपने वो क्यों डालते हैं क्योंकि जितनी सारी प्रिंट लाइन्स होते हैं जितने वो सब छोटे छोटे जो सब मार्क्स होते हैं उसको एकदम अच्छे से उसको एक लेयर डालने के लिए ठीक है आपका से सैंडिंग एकदम ठीक है. सो इसी मॉडल को आई थिंक वी आर गोइंग टू सैंड क्योंकि इसका सैंडिंग हो चुका है. इसी मॉडल में हम लोग प्राइमर डालने वाले हैं. Alors ils parlent de sanding, ça veut dire qu'à un moment donné ils vont faire un sablage. Donc ils ont fait un dégrossissement et ensuite ils vont faire un sablage. Alors là ils passent une couche de primer. सो बेमल कोट बनाएंगे तो उसका जो ब्लू कलर के लिवर है तो उसका फर्स्ट प्राइमर फर्स्ट कोट जाएगा इसका. सो एसेंशियली वो स्प्रे पेंट के लिए Ah non, ils vont directement J'adore, ils font ça à l'extérieur sur le toit terrasse de leur baraque quoi. So after first stage of coloring, the primary color जब हम लोग डाल देते हैं हम लोग फिर मास्किंग एरिया में आते हैं. तो यहीं पे इसी टेबल पे हरीश बैठता है and he does all this masking here.
C'est vraiment à fond artisanal. Ouais, c'est vachement. So उसी का ही यहाँ पे मास्किंग हो रहा है, प्लस इसमें वो ब्लू मतलब सेकंड जो कलर बैठने वाला है तो उसके लिए मास्किंग चल रही है. Basically ये sanding फिर filler primer देना फिर इसका first coat of color सब कुछ हो जाने के बाद जब एक मॉडल रेडी होता है तो पेंटिंग कंप्लीट ऐसा हम लोग बॉक्स में रखते हैं इस चीज़ को. So this is how a properly made model ready for decaling, ठीक है, looks like. So ये जो एक हम लोग WAP 7 के मॉडल हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, HOG मॉडल है ये. So ये वाले मॉडल में सेम प्रोसेस के थ्रू ही गया है. आई मीन दिस वेंट फॉर सैंडिंग, देन फिलर प्राइमर से इसको वो पूरा प्राइमर डालें, क्योरिंग में रखें, फिर केम फॉर मास्किंग. सो उसका फर्स्ट कोट ऑफ कलर ऑलवेज लाइक इट्स वाइट, देन मास्क करके उसको ब्लैक किए, देन उसको फिर से मास्क करके टॉप को सिल्वर किए. सो इतने सारे लेयर्स एक मॉडल में जा रहे हैं तो उसको भी लाइक वैसे क्योरिंग टाइम भी उसका होता है. सो बैचेस में ही होता है ये सब चीज़ें. एंड वंस इट इज कम्प्लीटली डन, this gets downstairs again for decaling and to have their details. I mean details as in like handles में वो silvering करना, things like that. छोटे छोटे जो वो सब painting के जो details हैं. So this is our exciting room. This is where all the magic happens. So meet, she is Prasanna. Hi. She looks after painting, decaling, any like the finest of the detail that you can point out in our model and it's painted is basically hers, and she's accountable for. And she's Sumita. Hello. She's working for the assembly team, so she's mainly accountable for the RTR models and all the assembly things in this company. So RTR ça veut dire ready to run. I'll talk to you later. So the process get through. Yeah, sure. So जैसे I told you, हम लोग का वो पेंट जब कंप्लीट हो जाती है पूरा तो वो यहाँ पे आता है. So can I see a normal shell that you have just got? Correct. So this is one another WAP 7 का shell that she has got which got QC passed और वहाँ से वो नीचे आया है for her to decal. So ये रख लीजिए and show us like कभी कर क्या काम कर रहे हो? Now I'm doing this detail parts का detailing, जो basically इसके ऊपर जो जाता है उसको, तो को complete. So yeah, like doing this detailing. So like I told you, I mean the smallest of the detail that you can spot in our model, and it's well detailed. So it's her job. I mean ये जो capacitors जो यहाँ पे है, it's all painted and everything. So they basically come like this paint, okay? So I detail them like this capacity. So these parts will go on top of this shell. Which essentially the assembly team will take care of. Micro cristal clear. Ah non, c'est du micro 7, oui, c'est ça, c'est... Ouais, c'est ce qu'on utilise dans... So line is set. So this is how essentially one decal process is done. The whole decal will continue. Tous les marquages sont faits. पूरा और भी नेम्स आएंगे, ये सब जो भी शेड नेम होता है. अब ये है शेल्दा शेड नेम है ये शेल का, तो शेल्दा एंड इट्स नंबर. ये लिफ्ट कैप 2 कैप 1 दीज आर कॉमन डिटेल्स सब में आएगा. एंड ऑफ कोर्स इंडियन रेलवे. तो दिस इज लाइक पूरा डिटेल कंप्लीट वाला शेल.
only like Indian Railways, we have like multiple miniature figures as well in each kit. So some of them are all painted. So we have got two variants. One is unpainted, one is painted. So these are like the painted ones, and she's the artist, so she paints all of these small details. I mean, you can even see different types. Ouais, c'est non seulement c'est peint à la main, mais ensuite il y a des détails qui sont ajoutés par l'artiste peintre. C'est plutôt joli, hein. C'est impressionnant, hein. Of biscuits, different types of samosas and everything. Chutneys. Chutney भी दिया है. Paper भी है. Green. हाँ, green chutney. If you want red chutney, you have red chutney. And these are in process color. Yeah, so these are in process, so you have police, beggar, lady in bag, everyone. And Muslim lady with all that burqa nose piece details. So all this detailing and everything is done by her. With bindi and bangles. And one with bag and sardar. Bada sardar. So once everything is done, everything is on the assembly team, with assembly team. So we quickly go to the assembly process. We start as soon as possible, जितना जल्दी हो सके हम लोग assembly से शुरू कर देते हैं, because we don't like our clients to be waiting for a long time. So she's the one who takes care of assembly, and she's working in the team. So ये वाला जो एक model है, she's been. Alors là, on arrive sur l'assemblage et la mise en place de l'électronique. अभी वो complete हुआ है just with all the working pantographs and everything. On voit un décodeur que on connaît. So this is one complete, very nice. This is a sound model. So I'll just show you how we basically do. As it is a little bigger process, so we basically divide them into different assemblies. So one thing that the shell assembly will be done separately, and we will do the chassis assembly separately. So in chassis assembly, so you basically get chassis like this after painting, you might have seen there, and we get this metal chassis block. Okay, so these two things comes. At first we divide this into bogie sub assembly, because bogies will be there, and also we divide into cab sub assembly, because these are a lot of time taking things. Okay, so these are ready to assemble now. So in bogie assembly, basically. Ah, c'est vachement intéressant parce que ils décrivent les différentes étapes avec le bas de caisse, le lest, les cabines qui ont été peintes par ailleurs par l'autre poste de travail, par l'autre personne, et puis l'assemblage des différents éléments, le tout étant vachement artisanal, quoi. C'est assez marrant, hein. C'est impressionnant, hein. Basically, first we check on the gearboxes, wheels, springs, if these are working properly or not. Okay. So first we check on all these elements, and also we grease them. We oil the bearings, we grease them. Elle parle de la lubrification des réducteurs pour ceux qui suivent la chaîne. Individual wheels we check if they're working perfectly or not. Il y a les petits paliers en bronze. So every time when there is a production run goes on, I mean we plan it we have to do a production run of Web 7/9, RTR or lighted model or any model per se. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग
ऐसे एलिमेंट्स का सब असेंबलीज जो होती है ना, तो हम लोग ये पहले उठा लेते हैं. So these are few sub assemblies that are very much important for us to do for the production run that we are going through. So that is what ये जो RTR model का production run हुआ है, we have basically gone through the same process. So ये सब bogies, फिर ये chassis, फिर cab assembly, वो metal cast, वो सब भी हम लोग एक batch में करते हैं. So once we check on the gearboxes, springs, wheels, then we clean that and solder with the wires and keep them ready to assemble. So next comes the cab assembly. So here you can see this light board comes, which will have the headlights. Ouais, ça, Headlights, white marker lights and red marker lights. Can you explain it again? Just a moment, let me focus on that board. Yeah, so this is the light board which comes in front of the cab. So these are the headlights, white marker lights and red marker lights. So this comes like this. Then we take help of different, there is a jig where we make holes and then we solder with the wires and it comes like this. So this is ready to assemble with the cab. So it's not always about the looks. It's not always about like how authentic it is. It's sometimes like I won't say sometimes, but mostly it is functionality as well. So functionality as in like the electronic bits, and that is what essentially she's showing you: the light assembly, the bogie assembly, the warm gear, and everything. So here we check every small things like if the light is visible from these holes through these holes properly or not, because these are very important things when we see in the model. Each small factors matters a lot. So like that, and then it comes like this. After doing all the sub assemblies, the cab is ready to assemble now. Similarly, this motor assembly also is another thing we do. So these are the motors that we use, and they are all imported, of course. So they also goes in a small sub-assembly batch work. So Bon, déjà, l'étape, tout est complètement manuel, hein, donc c'est absolument dingue. Là, il est en train de parler des moteurs qui sont des moteurs qui ont été importés, donc ce serait certainement de Chine, déjà équipés, déjà équilibrés avec des volants d'inertie. every wires are pre-cut. I mean, we have to cut them separately, tin them. We have to, glue these flywheels. I mean, the motor is separate, and these two flywheels come separately. So they are, separately glued down, assembled. Ah non, c'est eux qui font l'assemblage soldered, des then volants kept. d'inertie sur les And axes once that moteurs. is done, that goes onto these metal casts, sitting just like this and ready to roll. Then we fix the bogies here, you can see like this, and it comes like that. So coming back to the RTR assembly, so this is the first stage that it goes to, right? I mean, इसको लेके हम लोग literally घंटों भर चला के रखते हैं, देखते हैं कि कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, कितना शेक हो रहा है, नहीं हो रहा है, घंटों भर चलती है. कोई भी अगर इशू होता है ये मॉडल को लेके, तभी हम लोग पकड़ लेते हैं. I mean, the most important issues that we see is like how well it is running, how smooth it is running. If it's there any shake or wobbleness that it comes along with the bad gauge wheels, maybe. Then if it's lubricated or greased properly, वो होता है ना, बहुत आवाज आती है गियर घूमने के टाइम. And since it's a sound model. Ouais, donc là, en gros, elle a fait un montage rapide avec les fils, et ensuite ils font une étape de test pour vérifier le comportement des réducteurs et du moteur, et du bon graissage, de la bonne lubrification, et de comment cette partie-là de la caisse réagit aux commandes,
et à la consommation. C'est intéressant, hein? I mean, like, it has sounds built in. We don't want our, clients to have that gear noise along with those sounds. I mean, you need to listen to that hummingness of our RTR, right? In that, WAP 7 WAC 9 के वो जो hummingness होता है. So ये चली जाते हैं हम लोग ऐसे टेस्ट ट्रैक. So वो हो जाने के बाद, so we see how well it's running. Ça tourne propre, hein. Ça tourne super propre. So हम लोग slowly run करते हैं to see if there's any wobble, and we mainly look after the coupler if it's vibrating a lot or it's shaking a lot or something like that. Yeah, so once the first test run is passed for our chassis sub-assembly, yeah, so then here we do all the electrical connections after cab assembling the cabs. These cabs come like this. Donc il y a les cabines qui sont assemblées ensuite, et puis la suite du process, quoi. Install the speakers, decoder. Parleur sur le décodeur. The decoder at the end of it. First we do all the electrical connections with the 21 board pins, 21 pins board, and we do all the motor Décodeur 21 pins. board, everything. Ah, c'est un ESU que j'ai. Je crois que c'est un log 105 qui est à l'intérieur. Alors, regardez. Mainly programming happens This is a decoder. using. This is a 21 Ouais, ça c'est un décodeur. C'est un décodeur ESU, ça. pin board, and this is a motherboard. And these are the speakers. Basically, you can see the speakers. So all the lights, speakers, I mean the connection with wheels to the motor, motor to the board, all are getting together into one place. And once after that is done, I mean she takes over to the programming side. I mean जहाँ पे हम लोग computer में बैठ के like we have to program each and everything. So हम लोग के different models have different shade numbers. So अपने DCC जो motor है ना, जो controller है, so we only put like the last 4 digit of the logo. तो वो program करना, फिर checking out if the sound is coming in well, if there is any other electrical issues or not. तो वो सब check करने के बाद ही फिर final assembly को जाता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा. There are like 2 stages of assembly that happens. One is chassis assembly, one is shell assembly. So that happens mostly onto most of our our rolling stock models. I mean, except freight wagons. Freight wagons is one whole piece, but Bemel coaches ka, then hum log ka ye WAP 7 WAC 9, WDM, all of these locomotives have like 2 stages of assembly. So once Shumita takes care of the RTR model, once the first sub assembly is done, जो मैंने आप लोगों को पहले दिखा वो metal cast और just motor लगा के, वो जब हो जाता है, जब उनके पास चला जाता है for all the electrical work, that time I kind of focus on the shell, because shell has a lot small details and to focus. As earlier I have shown you, like वो सब roofline details में all the details that you can see here, so it fixes like this. ठीक है, यहाँ पे ये जा रहा है, फिर all these functional pantograph that it goes in. So ये सब चीज हम लोग को लगाना पड़ता है, ठीक है. And the smallest of the details that you can ever find in all of the models perhaps are these connectors. So these are all 3D printed. And 3D print होने के बाद ये फिर पेंटिंग को जाता है, QC में आता है. QC में आने के बाद once they are passed, so as you can see, it is so delicate. थोड़ा सा भी प्रेशर ज़्यादा लगाने से it might break. This is one small piece that I have to assemble here in this WAP 7.
So these are some small little things that we add to put more details into the model. All the details and everything are done. We simply take the shell and the chassis and we fix them together. And this is the most difficult bit, because if anything goes wrong here, you know, I mean, it all starts from the bottom, from the start. There you go. I mean, two things coming at once, and you're sitting down with a beautiful WAP 7 TCC sound model. And once it's completely finished with all C'est super the propre, details, hein. La réalisation finale. I mean, they have got all these small, you know, wire connectors. You can see there's this one detail in here that connects the pantograph with the roof line. There's a brass wire that connects here. So all these small detailings that we do to make your model more accurate, more beautiful looking. So can we have a test run, please? Oh, of course, we would love to. So once these models are done, I mean, we put it on the track. So आप जैसे देख रहे हैं, so we are using one WAG 9 and the livery is Guti. So the shed number is 32008. So what we use for this is, we use only the last 4 digit of the loco number. Once that is done, so you select 2008 and select again. So your loco is selected. It's all functioning right now. So if you just pull the throttle a bit, your loco will start moving. C'est super propre, hein. Attelage caddie. Once everything is done, I mean, we have checked thoroughly with the sound, with the functionality, with all the components that are intact with the model. We then head back to the packaging, and this is one of the model that was, you know, given to our one of the most valuable customer, Fez, and he's like the first receiver of our DCC sound model. So this is how it gets packed. I mean, with an acrylic case, with a, you know, FDM printed cradle. And once it is all done, it gets into this box with all your, you know, with all the functional, you know, user manual, with all these things. I mean, all the guides, how to open them from the cradle, all the warranties, and all the informations and things like that you need for these logos. And once that is done, we give them to our valuable customers. One of them is Fez. Thank you so much for ordering one of these. Yeah. BMW. There you go. So this is one process of how we make one model. I mean, I don't know. I mean, it started from about an hour just to explain, you know, what it takes for a model to make. I mean, from the 3D printing to sanding to painting the first primary color, then again coming here with multiple QC rounds, then coming into, you know, to the artist. Moi, je suis très agréablement surpris sur la qualité qu'ils réussissent à avoir. Again, few QC round goes into action. Then, lastly, comes into the assembly team.
And assembly team is one of the most vital areas in this organization, because all the small parts, all the big parts, they're accountable for. They need to have everything at their account for one model to make, for them to make a one model completely, right? And just how I show you, I mean, how a smallest detail can, make such a big difference to a model. That's how, I mean, assembly is one of the most critical stages of this organization, be it RTR models or be it any rolling stock. So as you know, like we have all the BEML coaches, freight wagons, and many others that are coming. So FTR, ça veut dire ready to run. Just like I've told you, like Shumita जो है वो हम लोग का पूरा electronic and RTR का ही देखते हैं. And I mainly focus on les traductions sont the overall assembly of any model that I can have in my hand. I mean, RTR तो है ही, उसके साथ साथ आपका ये WDMs भी आते हैं. So as you can see, WDMs भी आते हैं. These are all free rolling model. So this is the Pune. This is the Pune livery. We have Kazipet, we have Mughal Sarai, we have Tughlakabad, we have Agra, we have Krishnarajapuram. So we have a lot of varieties of WDMs, which essentially some of them are in our website. Go check it out, and some of them are yet to come. So ये हम लोग एक छोटा सा डिस्प्ले है in our workshop, जहाँ पे आप देख सकते हैं it's a platform kit जो हम लोग के website unauthorized photography, videography is prohibited. Of how you can make your own small platform diagram. And since हम लोग वो RTR को लेके बहुत सारे बातें की हैं previous मतलब देख लेंगे. So now we'll just give you an overview of how our VAP7 Wagner RTR models with sound looks like when you put them on a proper display. Okay. So इसको और थोड़ा realistic कर देते हैं. So Precision Model Works is a very small team, but yet we are making a big difference in terms of the industry, the model railroad industry. We are just hoping we could achieve something that we are already hoping for. I mean, to bring joy to people. I think that's something that we are really aiming for. And some of our team, I mean, one of the person has left. I think he's not here, but most of us are here. So Durga, who's here to help us around, Sumita, our assembly team, Jyotirmoy works completely for BMW admin. She takes care of everything. I mean, what goes out, what comes in, everything is under her account. She's Prasanna. She's the most jolly, fun-loving, and the happiness of this company, I guess. She is handling all the decalings, detailings, and all the artistic work. And I, myself, am Arka. I'm looking after the assembly team as well, and overall what goes in and what goes out. So thank you for being with us, Fez and Akash. It was great having you guys here. Hope we'll have more fun going forward. Sure. Thank you. तो फैज, आकाश, देख लिए अपना
Je vais arrêter là, parce qu'ensuite, après, c'est du blabla. C'est très intéressant. Alors déjà, moi, je suis agréablement surpris, en fait, parce que on voit bien que euh, avec l'impression 3D, l'impression résine et aussi la FDM, on est capable de pouvoir produire des choses qui sont de plus en plus proches des grosses industries qui font de l'injection plastique. Alors là, c'est vraiment un artisan, enfin, c'est une petite entreprise artisanale, une petite PME, mais ils produisent des choses qui sont assez jolies, hein. Moi, je suis vraiment très surpris. C'est le, le chemin de fer indien. Pour moi, j'ai toujours cette image d'Épinal, vous savez, avec les, les trains surchargés, surbombés, sur des voies parfois pas forcément conformes à ce qu'on a l'habitude de voir en Europe. Mais moi, ça me fait plaisir de voir que bah, finalement, dans des pays émergents comme qui sont un peu plus qu'émergents maintenant, comme l'Inde, il y a des artisans comme ça qui, euh, qui proposent des modèles. Et, et du coup, c'est vachement, c'est vachement intéressant parce on a envie je dirais pratiquement, on a envie d'avoir un modèle comme ça qui roule sur son réseau, quoi. Ça, je trouve que c'est vachement, c'est vachement positif. Moi, ça m'impressionne. Alors après, évidemment, on est sur on est très très loin des process de Marklin, etc. Et puis bon, là, on sent que c'est une, c'est une, c'est une petite entreprise, donc du coup, effectivement, on n'est pas des gros paquebots, des grosses usines. Bon, après, on voit que c'est vraiment un travail qui est manuel. Moi, j'ai été très impressionné par le travail de comment ça s'appelle, de peinture sur les figurines, parce que là, on est à l'échelle à chaud. On voit il y a beaucoup de parties de matériel un peu critiques qui sont faits par des fabricants tiers. Là, on en a vu un décodeur ESU, donc c'est un log 105, hein, manifestement. Mais ils viennent et ils réutilisent comment ça s'appelle, les différents éléments pour pouvoir justement produire un modèle. Euh, et ça, je trouve que c'est assez impressionnant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc là, c'est une vidéo, c'est un reportage de la chaîne Indian Rail Model. Et du coup, bah, je vous remettrai le lien de la vidéo en description. C'est... Ouais, ça donne envie. Vraiment, ça donne envie. Ça rassure aussi énormément sur la capacité qu'on peut avoir euh, à voir que le modélisme ferroviaire n'est pas que un loisir occidental. Et donc ils ont un site internet. Ah, je vais vous partager. Là, on a le site internet de Precision Model Work. Et, et c'est Indian Railway. Alors, Ready to Run. Motorized Locomotive. On va regarder celle-là. DCC Ready.
Alors évidemment, là, on doit être en... on doit être en roupie. Je crois. Donc, 14 100 roupies en euros. « 147 euros. » Donc ce modèle-là, il est à 147 euros. Voilà. Avec tout le travail avec tout le travail qui est fait, ils te sortent un modèle à 147 euros. Donc ils se prennent une marge et ils ont une équipe de 6-7 personnes. Voilà. J'espère que vous avez apprécié, comme moi, de regarder et de découvrir ce fabricant que je ne connaissais pas. Donc, précision modèle Works. Proudly made in India. Et donc, c'est leur site internet, c'est precisionmodelworks.co.in. Et moi, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est... je trouve ça vachement émouvant, en fait, qu'on ait des artisans comme ça qui produisent dans des pays émergents comme ça pour leur marché intérieur. Parce qu'il faut être clair, il y a très peu... Nous, Européens, on est très... centré autour de notre nombril en termes de modélisme. Mais je trouve que c'est vachement intéressant parce que bah, déjà de voir la passion, la motivation pour faire ça, parce que mettre tous les petits décalcomanies, peindre les figurines, tout est peint à la main, tout est fait à la main, en fait. On n'a quasiment pas de process industriel, si ce n'est l'usage des imprimantes 3D et de la conception assistée par ordinateur pour faire le modèle. Donc il y a une vraie compétence en termes de fabrication du modèle, et on arrive à quelque chose de vraiment magnifique, quoi. Hein. Je suis vraiment épaté. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous remets le lien de la vidéo complète, parce que j'ai pas mis ensuite après toute la phase de discussion, parce que là ensuite après, à mon avis, c'était moins intéressant. Et puis, bah, moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Un grand merci à toutes les personnes qui font des dons sur la plateforme Tipeee pour m'aider au financement de la chaîne, au financement des projets. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci aussi à toutes les personnes qui mettent des messages dans la section commentaires. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça me fait plaisir et ça permet d'augmenter le référencement des vidéos dans les algorithmes de YouTube. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite, et puis aussi à très bientôt pour une autre vidéo commentaire. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et faites du train. Ciao!